Assalamu alaikum viewers, this is Umair Khan in front of you once again from BN English Center with the topic conditionals. Hope that you have watched the previous lectures regarding the conditionals. The first one was introduction, then zero conditional and first conditional. If you haven't watched so far, go to the description, the links are available, watch them and learn new things. If you have any comments and queries, you can give your comments in the comment section. Your comments will be appreciated. And if you are new to the channel, don't forget to subscribe and press the bell icon. And if you like today's lecture in particular, don't forget to give it a like. Coming towards the second conditional, which is the topic of today's lecture. This is one of my favorite and interesting topics of grammar, which is an amazing grammatical point. You will enjoy a lot, so don't miss a point. Pay attention, try to learn each and everything, and must apply in your speaking as well. So here we go. First of all, I'll explain the structure and then we'll go towards the examples. So structure, अगर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल के फॉर्मूले की, सबसे पहले इफ़, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंडीशनल के लिए इफ़ का होना लाजमी है या व्हेन का होना लाजमी है. उसके बाद पास्ट सिंपल एंड देन सब्जेक्ट एंड वुड एंड इन्फिनिटिव, और वी कैन से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज़ द फॉर्मूला. इफ़ प्लस पास्ट सिंपल को हम कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, और कंडीशन क्लॉज जिसमें कंडीशन मौजूद होती है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रिजल्ट क्लॉज. दिस इज कंडीशन क्लॉज एंड दिस इज द रिजल्ट क्लॉज. पास्ट सिंपल, if you don't know about the past simple tense, so I have given the link in the description. You must go to the description and watch the lecture of past simple tense. It will be easier for you then to understand. Now we are coming to the examples. The first one, if I had wings, I would fly for a world tour. इस सेंटेंस को अगर देखें, if I had wings, अगर मेरे पर होते, I would fly for a world tour, तो मैं पूरी दुनिया का टूर कर लेता. इंसान के परों का होना पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अनरियल सिचुएशन, मीन्स नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. दिस इज अनरियल सिचुएशन. सो अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सेकंड कंडीशन, यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. इफ आई हैड अ गोल्ड वॉच, आई वुड बी द रिच पर्सन. दिस इज ऑल्सो अनरियल सिचुएशन. देन इफ यू वन अ लॉटरी, वेयर वुड यू स्पेंड मनी. अगर आप एक लॉटरी जीत लेते या आपकी एक लॉटरी निकल आती, तो आप पैसों को कहाँ खर्च करते. सी, दिस इज फ्यूचर अनलाइकली. फ्यूचर के बारे में है लेकिन अनलाइकली. हो सकता है कि आप कोई लॉटरी जीत जाए, लेकिन हो सकता है कि आप ना जीते. 50-50 चांसेस हैं. दैट्स वाई दिस इज फ्यूचर बट अनलाइकली. If you had a chance to become a president or prime minister, what would be your priorities? If you had a chance to become the president or prime minister, what would be your priorities? This is also what about the future, but unlikely to happen. बहुत कम chances हैं. Rare chances are there to become a president or prime minister. Maybe, but the chances are very less. So this is also the sentence, or this is also related to the second conditional. If you could travel to any country, where would you go? अगर आप किसी मुल्क का सफ़र कर सकते, तो कौन से मुल्क जाते. This is also possible but unlikely, maybe or may not be. Now this one, very interesting one. If I were you, अगर मैं आपकी जगह होता. If I were in your shoes, अगर मैं आपकी जगह होता. बोथ आर करेक्ट. इफ़ आई वर यू और इफ़ आई वर इन योर शूज़. अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड मूव हेवन टू अर्थ फॉर सक्सेस. तो मैं कामयाबी के लिए ज़मीन व आसमान एक कर देता. अगर मैं आपकी जगह होता. दिस इज़ नॉट पॉसिबल.
A person cannot be in someone's shoe. कोई किसी की जगह पर नहीं हो सकता. Everybody has its own personality, everybody has its own nature. So this is also unreal, uncertain situation, unreal situation. And the point to be noted, if I were you. Normally हम यूज़ करते हैं I was, I, he, she, it के साथ हम was का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए रूल है कि आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जहाँ was इस्तेमाल होता है आप वहाँ भी were इस्तेमाल करेंगे. सो कंडीशनल सेंटेंसेस में it is much more better to use were as compared to was. If I were, then if I had money I would lend it to you. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता. कोई आपसे पैसे मांगता है, आप उसको रीज़न देते हैं, यू नो, शोइंग रीज़न. आप रीज़न शो करते हैं कि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता. मीन्स दैट मेरे पास पैसे नहीं हैं. सो these sort of sentences can also be made. If I had enough money I would buy a car. अगर मेरे पास काफ़ी पैसे होते तो मैं एक गाड़ी ख़रीद लेता. दिस इज़ प्रेजेंट सिचुएशन. इमेजनरी, अगर पैसे होते तो गाड़ी ख़रीद लेता, मीन्स दैट पैसे नहीं हैं. सो दिस इज़ एन इमेजनरी सिचुएशन अबाउट द प्रेजेंट कि इस वक्त मेरे पास काफ़ी पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कार नहीं ख़रीद सकता. आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड all the points regarding the second conditional. Now I would request all of you to make some of your own sentences regarding the second conditional, applying the formula of second conditional. Your comments will be appreciated, your sentences will be appreciated, because you can make so many interesting sentences yourself. See you next time with a new lecture of conditional sentences. Till then, take good care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.